Okay, so yesterday the last discussion was this decay, right? N goes to P plus pi minus. This is not allowed, right? This decay is not allowed because the rest mass of product is higher than the rest mass of reactant, right? That's why this decay is not allowed. Okay? Yes, sir. Okay, similarly, if you remember, this decay also not allowed. P decays to proton decays to neutron plus positron plus associated neutrino, electron neutrino. This decay is also not allowed because the mass of product is higher than the mass of reactant, right? Yes, So sir. this decay is not also not allowed. Okay. So today we'll also do some problems. So first problem will be sigma 0 decays to gamma. Gamma means photon plus lambda 0. Is this decay allowed? If yes, then what type of interaction it is? Can you please check? So shall I proceed? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So let's check charge conservation. So for sigma 0, charge is 0, right? So on the left hand side, charge is 0. For photon, charge again is 0. And for lambda 0, charge is 0. It means delta Q is 0. So charge is conserved, right? Now we'll check spin. Okay. For sigma 0, the spin is what? 1/2. Very good. So it will be in vector form. Okay. For gamma, spin is 1. very good. On. And for lambda 0, 1/2. on by 2. Okay. So two possibilities are there, on plus on by 2, and another possibility is on minus on by 2. So on minus on by 2 will give the same spin as reactant, right? So अगर on minus हाफ करोगे तो कितना मिलेगा? हाफ मिलेगा. वो लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसके साथ कंजर्व हो रहा है. It means spin is conserved, right? Did you get what I'm saying? Yes, sir. Yes, sir. Spin is conserved. Next. So let us check. Lepton by 1. Okay. Sorry. Lepton quantum number is denoted by capital L. So none of them are lepton particles. So obviously this number will be 0 for all, right? So it means, yes. Is not it? So it means delta L is 0. So lepton is conserved. Next. Baryon number. Baryon number. Yeah, baryon number noted by capital B. For sigma 0, it is plus 1, right? Plus. For gamma, it is 0. And for lambda 0, it is 1. Plus 1. It means delta B is 0. It means baryon is conserved, right? So exact conservation laws में सारे satisfied हो गया. कोई exact conservation laws में और है कोई? Is there any others from exact conservation laws? So it means this decay is allowed. Now we have to identify which type of decay is it. Okay. So let us proceed further. Now we'll check isospin or strangeness. Let us check. Noted by capital S. So for sigma 0, capital S is how much? -1. -1. Very good. For gamma, it is 0, right? 0. For lambda 0, -1. very good. It is -1, right? So it means delta S is 0. It means S is conserved, right?
Sorry. Sir, as stainless है ना sir? Yes, yes, Sir, yes. as is stainless. Yes. Okay sir. Next. Next one. Isospin. Yes, isospin. Can you please check and tell me? Please check it. So isospin is noted by capital I. For sigma 0, it will be how much? 1. Very good. 1. It will be on. Next, for photon, it will be 0. very good. It will be 0. And For lambda for 0, lambda 0. very good. It will be 0. It means delta I is not conserved, right? Because on the right hand side it is 0, but on the left hand side it is 1. So delta I is not conserved. Okay. Yes sir. Okay. Next, I3. I3. For sigma 0, it is how much? 0. 0. Very good. 0, right? For gamma, it is 0. And plus 0. Plus 0. Very good. It means I3 is conserved. Delta I3 is 0, right? Now, can you please tell me that what type of interaction it is? Sir, So you see, for strong Elect- interaction, all conservation laws should be satisfied, right? For Yes, EM interaction, I will not be conserved, but all other conservation laws will be satisfied, right? electromagnetic. Sir. Very good. And also, if you remember, yesterday we discussed, if gamma is involved, then it will be EM interaction. Yes. So you see, gamma is involved, right? So this interaction is allowed by EM interaction. Everybody agreed? Yes sir. Okay, very good. Okay, next. नेक्स्ट इंटरेक्शन है आपका पाई माइनस प्लस पी गोज टू K0 प्लस सिग्मा 0. कैन यू प्लीज चेक? ओके, थोड़ा आप गेस करके बताइए कौन सा इंटरेक्शन पॉसिबल है इसमें? Strong interaction. Very good, very good. Because proton is involved, and if proton is interacting with some other particle, then it will be strong interaction. Because यहाँ पे gamma नहीं है. अगर gamma होता, photon होता, तो some possibility was there that will be EM interaction. But this gamma is not involved here, so it should be in strong interaction if the associated conservation laws are satisfied. So let us check. Okay. So let us check charge first, noted by capital Q. एक सर अगर गामा यानी फोटोन अगर नहीं होगा रिएक्शन के अंदर तो वो EM इंटरसेक्शन नहीं होगा इंटरेक्शन. हेलो सर फ्रीज हो गया वीडियो. सर आपका वीडियो पॉज हो गया. Yes, can you please repeat? सर मैं ये कह रहा हूँ अगर फोटोन नहीं हुआ रिएक्शन के अंदर तो इसका मतलब वो EM इंटरेक्शन नहीं होगा, वो स्ट्रांग हो जाएगा. नहीं, ऐसी बात नहीं है. अगर फोटोन होगा तो डेफिनेटली उसमें, अगर फोटोन सपोज मान लो यहाँ पे फोटोन होता तो इसमें दो चांस बनता, क्योंकि प्रोटोन है, प्रोटोन लेफ्ट हैंड साइड में किसी पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो स्ट्रांग हो सकता है. अगर फोटोन है तो EM होने का भी चांस है, वो चेक करना पड़ेगा. जैसे कल एक एग्जांपल लेके किया था ना हम लोगों ने, गामा प्लस पी. कल मैं मिस कर गया था सर 2 क्लास, एक्चुअली मैं बाहर आया हूँ तो सर 2 क्लास मिस हो गई. Yesterday we have discussed on problem gamma plus P. I mean proton interact with gamma photon and it gives pi 0 plus P, and that interaction was EM interaction, right? Everybody agreed? Yesterday we have discussed, right? Okay sir. तो यहाँ पे अगर प्रोटॉन है और कोई सबएटॉमिक पार्टिकल है other than photon, so it should be EM interaction if the associated conservation laws are satisfied. So let us check charge first. Charge conserved है? So कोई doubt? Yes, Is there sir, any doubt in the class? If doubt, is there any doubt? कोई doubt है क्लास में? तो सर क्लियर है सर. ओके, चार्ज कंजर्व है यहाँ पे, बोलिए जरा.
सो पाई माइनस का हाँ सर हाँ -1 है, वेरी गुड। इसका कितना होंगे? +1 Plus. होंगे। हाँ K0 का 0 है ना, और आपका सिग्मा 0 का 0 है। इट मीन्स डेल्टा की वैल्यू 0, so charge is conserved. Let us check spin. पाई माइनस का स्पिन कितना है? 0, राइट? Is not it? For pi minus spin is 0. For proton spin is how much? Half, right? हाफ Very good. For K0 spin is 0. And for सर वीडियो क्वालिटी सही नहीं है सर। okay. So for यस सर sigma 0, that spin is 1/2. So spin is conserved, right? यस सर। Now we'll check lepton number, right? So none of them are lepton particle. Obviously, L will be 0 for all, right? It means delta L is 0. So lepton is conserved. Next, Baryon वेरिएबल नंबर very good. So is it conserved? यस सर। यस सर Very good. So for pi minus it is 0. For proton it is 1. For K0 it is 0. And for sigma 0 it is +1. It means delta B is 0. So baryon is conserved, right? Next. Isospin. आइसोस्पिन Okay. So strain S noted by capital S. So for pi minus it is how much? 0 Very good. 0 For proton, 0 0 very good. For K0, +1 very Plus. good. For -1. very good. So it means delta S is 0. Okay, please don't confuse with this S. Okay, S means strain S, not spin. Okay, यस सर okay. Next, आइसोस्पिन is it conserved? यस सर। यस सर Very good. So I for pi minus is 1, right? 1 1 Very good. For proton, 1/2 1/2 very good. For K0, 1/2 very good. For sigma 0, 1 1. very good. So delta I is 0, right? यस सर It means I is conserved. Next, I3 I3 I3. So for pi minus, -1 -1, -1 1/2 plus 1/2 very good. -1/2 -1/2. Very good. 0 +0. It means delta I3 is 0. So I3 also conserved, right? So what type of decay or interaction? strong strong Very good. interaction Very good. So it is strong, right? Okay. yes sir Okay. Next problem. सबको समझ में आई? Is there any doubt here? Is there any doubt? no, टेबल के बारे में Sorry. सर आपने एक टेबल बताई थी ना जिसमें फैमिली सिंपल स्पिन इलेक्ट्रॉन नंबर वेरियन नंबर हाँ स्ट्रेंजनेस हाँ आइसो स्पिन I3 yes. सर उसको न्यूमेरिकली मतलब रिमेंबर कैसे कर सकते हैं वो न्यूमेरिकल रिमेम्बर करने का जरूरत नहीं है. प्रॉब्लम करते करते वो ऑटोमेटिकली हो जाता है ना, उसको याद करने का जरूरत नहीं है ना. जैसे जैसे आप प्रॉब्लम करते जाओगे है ना, वो याद होते जाएंगे, कोई इशू नहीं है उसमें, है ना. उसको ज्यादा सोचो मत, वो हो जाएगा. ठीक है, जैसे जैसे आप प्रॉब्लम करते जाओगे है ना, वो होते जाएगा. देखो प्रॉब्लम करते करते कितना क्लियर हो गया है ना, आगे करते जाओगे वो क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, तो हम याद कभी नहीं किए. ओके जी सर ओके. नेक्स्ट, pi minus plus p, proton interacting with pi meson and it giving the product that is pi 0 plus sigma 0. Okay, can you please check, is this interaction allowed? If yes, then what type of interaction it is? Please be careful for this problem. I am giving that hint.
Okay, can you please check? So let us check charge first. Capital Q, is it conserved? For my pi Yes, sir. minus, it is minus 1. Yes. For proton, it is plus 1. For pi 0, it is 0. For sigma 0, it is 0. It means delta Q is 0. Okay, no problem with charge conservation. Next, spin. Can you please check? Conserve. Conserve. Okay, for pi minus, it is 0. For proton, it is half. For pi 0, it is 0. And for sigma 0, it is how much? Half. Very good. So it is conserved. Next, Radon number lepton number noted by capital L. For pi minus, it is 0. 0. For proton, it is 0. For pi 0, it is 0. For sigma 0, it is 0. It means delta L is 0. So no problem with lepton conservation. Or lepton number is conserved. Next is baryon, right? For pi minus, it is 0. For proton, it is how much? +1. Plus 1. Very good. For pi 0, it is 0. For This one. sigma 0, it is plus 1. +1. So baryon also conserved. Delta B is 0. Next, Strangeness not conserved. Yes. not conserved, right? For pi minus, it is 0. For proton, it is 0. Then for pi 0, it is 0. But for sigma 0, it is minus 1, right? -1. Yes, sir. And- Minus 1. It means delta S is not equals to 0. Okay, next. Isospin. Is it conserved? Not conserve. Not conserved. Okay. So you see, the basic conservation or exact conservation laws are satisfied, right? This interaction is not it. आइसोस्पिन को भी वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे क्या? आइसोस्पिन वेक्टर की तरह, यहाँ जब इंटरेक्शन देखोगे तो वेक्टर की तरह ट्रीट करने का कोई जरूरत नहीं है, शामिल करके। ओके ओके। सर इसका कोई रीजन है? किसके? आइसोस्पिन एक स्पिन की तरह ही तो बिहेव करे। बट देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन स्पिन एंड आइसोस्पिन, राइट? जब हम इंटरेक्शन देखेंगे तो फिर हम जस्ट इसका समेशन करके चेक करेंगे उसका, ठीक है? यस सर। बट जब हम क्वार्क मॉडल में जाएंगे फिर उसका डिटेल्स में बताएंगे। जैसे आपका प्रोटॉन का क्वार्क क्या क्या होता है? प्रोटॉन का क्वार्क क्या अप डाउन। अप डाउन। बट प्रोटॉन का अप डाउन है, उसमें आपका आई कितना है? आपका आई कितना है? 1/3। आपका आई नहीं 1/2 होता है। 1/2 yes 1/2 होता है, ठीक है ना? Although it is made up of 3 quark, for up I is half, for down I is half, but resultant I of proton is how much? 1 है No, half ही है ना अभी तक। और रिजल्टेंट नहीं सोची। हाँ, तो tomorrow we'll discuss details about this. But जब भी हम इंटरेक्शन की बात करेंगे ना तो हम उसको जस्ट समेशन लेके चेक करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना? कोई भी प्रॉब्लम आएगा मतलब प्रॉब्लम देखना आप समेशन मतलब एडिशन करके आप चेक कर सकते हो, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब तक जो प्रॉब्लम किया कोई प्रॉब्लम हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ना? सारे सॉल्यूशन आ गया, है ना? यस सर। ओके सर समझा नहीं, आइसोस्पिन अप डाउन 1/2 1/2 -1/2 तो रिजल्टेंट 1/2 आएगा। कल डिस्कस करेंगे ना। हाँ हाँ सो प्रोटॉन का आइसोस्पिन 1/2 है हाँ, और कंस्टिट्यूएंट अप डाउन है तो 1/2 1/2 -1/2 समेशन 1/2। डाउन का -1/2 नहीं होता है आइसोस्पिन तो, हाँ प्लस हाफ होता है। I3 माइनस हाफ होता है डाउन का, ठीक है? वो कल डिस्कस करेंगे जब क्वार्क मॉडल हम जाएंगे ना डिटेल्स में। ओके अब इस प्रॉब्लम को बताओ, इसमें I3 कितना है? नॉट कंजर्व। नॉट कंजर्व -1/2 -1 -1 +1/2 0 0 0 0 0। तो ये कंजर्व है? नो सर नॉट कंजर्व। नॉट कंजर्व, राइट? वीक इंटरेक्शन। पहले मैंने क्या बोला था? बी केयरफुल अबाउट दिस प्रॉब्लम। ऑल्दो इट सेटिस्फाइड exact all exact conservation laws,
but not satisfied approximately. But what I said, if proton is interacting with some other particle, then it will be what interaction? Strong. Strong interaction, but it is not satisfying that associated conservation laws. Do you get what I'm saying? Yes, sir. It is not satisfying the associated conservation laws with strong interaction. That's why this decay is not allowed. समझ में आया आपको? सर allowed क्यों नहीं है? If proton is interacting with some other subatomic particle, then this interaction will be strong interaction if the associated conservation laws are satisfied. तो strong interaction में जो भी associated laws है उसको satisfied होना पड़ेगा, है ना? तो इसमें I3 कंजर्व नहीं हो रहा है, I कंजर्व नहीं हो रहा है, strangeness भी कंजर्व नहीं हो रहा है. That's why this decay is not allowed. मतलब इसका होने का चांस क्या था? स्ट्रॉन्ग में ही होने का चांस था, बट इसमें एसोसिएटेड कंजर्वेशन लॉ सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है. ओके सर इसका कुछ एक्सेप्शन हो सकता है? एक्सेप्शन मतलब लाइक सर, ये ये क्वेश्चन तो- जो मैंने आपसे डिस्कस किया था सर, हाँ. k माइनस प्लस हाँ, प्रोटॉन अगर सिग्मा माइनस. हाँ वो अभी आऊंगा. Yes. एक प्रॉब्लम तो मैंने अभी डिस्कस करूंगा, है ना? सर ये तो वीक का जो एसोसिएटेड कंजर्वेशन लॉज है वो तो सर मान रहा है, मतलब फॉलो कर रहा है. नहीं, जो मैंने कल लिखा था ना कि इफ प्रोटॉन इज इंटरेक्टिंग विद सबएटॉमिक पार्टिकल देन इट शुड बी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इफ द एसोसिएटेड कंजर्वेशन लॉज आर सेटिस्फाइड. मतलब ये स्ट्रॉन्ग में ही होंगे अगर सारे एसोसिएटेड कंजर्वेशन लॉज को सेटिस्फाइड करे तो, है ना? मतलब इसका रास्ता एक ही है, वो ईएम के लिए बंद हो गया, वीक के लिए भी बंद हो गया. अगर यहाँ पे गामा होता तो ईएम का चांस होता. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इफ जी सर. this is gamma then there is a chance of EM interaction, but this is not gamma, so there is a only chance that is strong interaction, and for strong interaction S should be conserved, I should be conserved, and I3 should be conserved, but it is not conserving. This interaction is not conserving that S, I and I3. That's why this decay is not allowed or interaction is not allowed. सर हाँ. सर Yes. अगर गामा नहीं है एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट है तो ऑलवेज इट गोज इन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन Yes. इफ कंजर्वेशन लॉज वैलिड. Yes. और अगर वैलिड ना हो तो ये अलाउड नहीं होगा. Allowed ही नहीं. ऑलवेज Yes. एनी. Yes. 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 Not always. Yes, what I'm saying, if proton is interacting with some subatomic particle, then it should be strong interaction if the associated conservation laws are satisfied. इसमें क्या डाउट है आपका? कोई डाउट है इसमें? और इसमें कोई डाउट है आपका? सर डाउट मतलब ये ऑलवेज हाँ स्ट्रॉन्ग होगा. हाँ, ये मतलब- ऑलवेज स्ट्रॉन्ग होंगे अगर ये सबएटॉमिक पार्टिकल आपका अदर सबएटॉमिक पार्टिकल है अदर देन गामा, है ना? कल मैंने आपको लिखा था, याद है कि अगर प्रोटॉन कोई सबएटॉमिक पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन कर रहा है तो वो क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होंगे if the associated conservation laws are satisfied. Similarly, if neutron is interacting with some subatomic particle, then it should be strong interaction if the associated conservation laws are satisfied. इसमें कोई डाउट? और No, sir. ये लाइन आप एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज. सॉरी, आई कांट हियर. कैन यू प्लीज रिपीट? सर आपने जो भी लाइन बोली सर आप एक बार रिपीट कर देंगे. If proton is interacting with some subatomic particle, then it should be strong interaction if the associated conservation laws are satisfied. Similarly, if neutron is interacting with some subatomic particle, then it should be strong interaction if the associated conservation laws are satisfied. Okay, shall I proceed? तो ये इंटरेक्शन अलाउड नहीं है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग में पॉसिबिलिटी था, बट जो आई है, I3 है और S है वो कंजर्व नहीं है. दैट्स व्हाई दिस इंटरेक्शन इज नॉट अलाउड. ओके, Yes, sir. हाँ, अब सॉल्व करना, प्रॉब्लम देखना, सारे हो जाएंगे, है ना? फिर नेक्स्ट इंटरेक्शन इज, सपोज यू हैव, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल.
सपोज सो ये कौन सा नंबर है, चौथा? ओके, सो सपोज कि mu minus mu plus interacting and they are giving the product that is k plus k minus. Okay, can you please check, is this interaction allowed? No sir. Is it allowed? K minus. No sir. No, why? The lepton conservation. Why? What problem with lepton? lepton तो conserved है. Yes, yes. So let us check one by one. So can you please tell me the charge is conserved? Yes sir. Yes, for Sure. mu minus it is minus on, for mu plus it is plus on, then for k plus it is plus on, and for k minus it is minus on. So no problem with charge conservation, it will be delta q will be 0 simply, right? Next, spin, right? Yes sir, conserved. Conserved, right? Very good. So it will be half, then it will be half, and it is 0 0. 0. So on minus half will give 0. That is one possibility. It means it is conserved. Next, lepton number. Lepton conserved. lepton number, capital L. Is it conserved? So for mu Yes, minus sir. it is how much? Mu minus. 1. 1. 1 Very good. For mu plus minus 1. minus 1. Very good. For 0, k plus 0. 0. Very good. For k minus it is 0, right? So no problem with lepton conservation. It means delta L equals to 0. So lepton is conserved. Now check, since lepton particle is there, so we have to check L mu also. Is it conserved? Yes Is it sir. conserved? Very good. It will be conserved, right? So it will be conserved on minus on 0 0. So delta L mu is 0. Next, Baryon number. no, none of them are 0. baryon particles, so baryon will be conserved, right? Yes sir. So B will be 0 plus 0, 0 plus 0. So it means delta B is 0. Sorry. So baryon is conserved. Next, Isospin. Associated. is it conserved? Yes sir. Isospin is conserved? No sir. No, right? No sir. Okay. So this interaction is satisfying that exact conservation, all exact conservation laws, right? So it is allowed, is not it? Yes sir. Now let us check strangeness. How much for mu minus? It is 0, right? For mu plus it is 0. Then for k plus it is how much? Plus 1. Very Plus good. 1. It is plus 1 for k plus. For k minus? Minus Minus 1. Very good. For k minus it is minus 1. It means delta S is 0. So no problem with strangeness. Okay. Now next, I. I3. I. Okay. So isospin Is 0 for plus k 0. minus 0 plus 0. Very good. Next, for k plus it is how much? Plus half minus half. Very good. So it is plus half. Then for k minus it is how much? Isospin? Minus half. Minus minus half. Is it? So what I wrote for antiparticle and particle, Isospin same. does not change. for particle and antiparticle, Oh, sorry sir. I is same, right? So there is no change in I. So it means for k minus also I will be how much? Half. I3 होता तो फिर कितना होता? Minus half हो गया. Okay? Did you get what I'm saying? Yes sir. Okay. I3 change हो जाता है. हाँ, I3 change हो जाता है ना? सर Yes. एक मिनट सर. Yes, सर yes. ये चार्ज की वजह से हुआ ना, मतलब नहीं नहीं, आई चेंज नहीं हो रहा है, I3 चेंज हो रहा है. I3 चेंज हो रहा है वो चार्ज की वजह से होता है ना? कि सारे जो हाँ. ग्रुप है, ग्रुप में चार्ज डिफरेंट होता है, इसलिए I3 चेंज हो जाता है, बट I सेम रहता है ना? हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, याद है आपको? हाँ, वेरी गुड. तो I कंजर्व नहीं है, I इज नॉट कंजर्व हियर. ओके, तो डेफिनेटली ये कौन सा नहीं होंगे? स्ट्रॉन्ग तो होंगे Strong नहीं होगा. हाँ, ओके. नाउ लेट अस चेक I3.
0 plus 0 plus 0 plus 0 half minus half. half minus half. Very good. So I3 conserved, right? Delta I3 is 0, so no problem with I3 conservation. Sorry, I3 equals to 0. Electromagnetic. So it should be EM interaction, right? Everybody agreed? Yes, sir. Okay, it should be EM interaction. Okay? No problem? No, sir. Okay, very good. Next interaction, ये आप लोग बताओगे, ठीक है? आप लोग बताओगे तो suppose mu minus decays to E minus plus photon gamma. Is this interaction allowed? Is this interaction allowed? No. No, sir. Why? So mu lepton number is not here. Number conserved nahi. Great. Very good. So electron lepton number will not be conserved. Mu lepton number will not be conserved. Total lepton number is conserved. But Le and L mu is not conserved. That's why this interaction is not allowed. Everybody agreed? Yes, Everybody agreed? कोई problem is Yes, sir. So this interaction is not allowed because it is not satisfying exact conservation laws, right? Not allowed. सर Yes. तो मुझे प्लीज एक बार एलई और एलयू नंबर कैसे चेक करते हैं थोड़ा सा बता दो। हाँ हाँ ठीक है, देखो इसमें ये आपका लेप्टन पार्टिकल है, तो इसका लेप्टन नंबर कितना होंगे? ऑन होंगे, कोई प्रॉब्लम? नो सर। ई का कितना होंगे? इसका भी ऑन होंगे। ऑन होगा। हाँ, गामा का 0 है, इट मींस डेल्टा एल इज 0, सो नो प्रॉब्लम विथ इलेक्ट्रॉन कंजर्वेशन। बट एल ई देखोगे, दिस इज नॉट इलेक्ट्रॉन लेप्टन पार्टिकल, सो ऑब्वियसली दिस नंबर विल बी 0 फॉर म्यू माइनस, but for E minus this number will be 1, right? And for gamma obviously this number will be 0. So on the right hand side you have plus on the left hand side you have 0. It means Le is not conserved. Similarly you can check L mu will not be conserved because on the left hand side you will get plus on, but on the right hand side it will be 0, right? So L mu will not be conserved. Okay? Yes sir. Okay, very good. Now next conservation is, sorry, next problem is, suppose neutron decays to pi plus plus pi minus. So is this decay allowed? No sir, baryon conserved. Very good. Everybody agreed? Yes. Sir. Okay, so this interaction is not allowed. Delta B will not be equals to 0. So that's why this decay is not allowed. Okay, so next problem will be interesting. Okay, next problem. So suppose K minus is interacting with proton and is giving the product that is K plus X, and X is producing via strong interaction. Then X is what particle? Can you guess that particle? So X यहाँ पे produce हो रहा है via strong interaction. Then can you please guess which particle is this? चेक कर सकते हो? Yes. Can you please do? So देखते हैं चार्ज कितना होगा उसका, सारे प्रॉपर्टीज का -1. -1 होगा। हाँ, very good. So देखते हैं हम. So for K minus charge is -1, for proton charge is +1,
and for K plus charge is plus on. So obviously for X the charge will be minus on from charge conservation, right? Yes, sir. Okay. Let us check lepton quantum number. For K minus it is 0. For proton it is 0. For K plus it is 0. Then X, for X it should be 0, right? Yes, sir. Then let us check baryon number. For K minus it is 0. 0. For proton it is plus on. For K plus it is 0. Then for X it 1. should be on. 1. So that X particle should be from baryon family. Baryon family. Okay. Now let us check. What will check? Spin. Isospin or strangeness. Let us check strangeness. Okay. For K minus. स्पिन तो इंटरेक्शन के बारे में भी हम लोगों को नॉलेज दिया है क्या कि किस Sorry? इंटरेक्शन से हो रहा है? हाँ सर इंटरेक्शन के बारे में भी हम लोगों को बताया है क्या? हाँ मैंने तो बोला ना कि X प्रोड्यूस हो रहा है वाया स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन. ओके ओके सर. हाँ ओके. X जो Yes, प्रोड्यूस हो रहा है वाया स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन. इट मीन सारे जो ये है क्वांटम नंबर है वो कंजर्व होना पड़ेगा. तो स्ट्रेननेस कितना है? -1 हाँ हाँ. K माइनस का कितना है? -1 -1. प्रोटॉन का कितना है? 0. 0. सर एक कैस्केड पार्टिकल हो सकता है. हाँ लेट अस चेक. नेक्स्ट कैस्केड K plus का -2 -2. तो इसका K प्लस का कितना है? +1 है, राइट? सो इट शुड बी -2, राइट? यस सर. वेरी गुड गेस. आपने किया है गेस लगाया? सर गेस लगा कैस्केड -2. ओके. तो हाँ इसका स्ट्रेननेस कितना होना पड़ेगा? -2 होना पड़ेगा, है ना? यस सर. कितना होना पड़ेगा? -1 होना पड़ेगा. I और I3 भी चेक करते हैं. For K minus I is how much? +half, right? Is not it? For proton I is +half. Okay. For K plus I is +half, and then for X particle I चेक करने की नीड है. हाँ चेक कर लेते हैं ना, सारे प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है सर हाँ क्योंकि देखो कैस्केड में बेसिकली 2 पार्टिकल होता है ना, सिग्मा Yes, sir. 0 कैस्केड 0 और कैस्केड -1 ना. Yes, तो sir, I3 चार्ज शुड बी नेगेटिव. I3 हाँ I3 नेगेटिव होना पड़ेगा, है ना? तो ये इसका I कितना होना पड़ेगा? हाफ होना पड़ेगा. ओके. और I3 for K minus it is -half, right? For proton it is +half. For K plus it is +half. Then for X it should be -half. half. तो ये जो सारे क्वांटम नंबर आपको मिल गया इस पार्टिकल का, तो पार्टिकल कौन सा होंगे फिर? कैस्केड माइनस. वेरी गुड, वेरी गुड. सो इट शुड बी, दिस पार्टिकल शुड बी. सर बोर्ड नीचे चला गया सर. हाँ समझ में आई बोर्ड ना? नीचे चला गया सर. बोर्ड राइट. योर वॉइस इज नॉट क्लियर, कैन यू प्लीज रिपीट? सर स्क्रीन टिल्ट कर दीजिए, बोर्ड नीचे हो गया. सर बोर्ड नीचे चला गया. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके. तो आप लोग आई तक दिखा दे, आई तक दिखाई दिया, आई थ्री देख दिए, आप लोगों ने लिख लिया? आई तक लिखा सर. आई तक. Okay. So I'll repeat for I3. Shall I repeat? Shall I repeat I3? हो गया सर. हो गया सर. हो गया ना? Yes, sir. So I am repeating again. For I3, for K minus it is -half. For proton it is +half. For K plus it should be +half. Then for X it should be -half from I3 conservation. Okay. It means X particle will be cascade minus. इसमें किसी का कोई डाउट नहीं है, राइट? Everybody got? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Next है K minus plus P decays to pi 0 plus y. Again, this is strong interaction. Now, can you please check y is what? Which particle? So K minus Gamma particle. Baryon or not gamma. This is y. So we have to check which particle is this. Okay.
So on neutron. No, you will check. It's not neutron. It is from baryon family. Okay. Baryon family. Let us check one by one. So let us check charge. So for K minus it is -1. For proton it is +1. For pi 0 it is 0. Then it should be 0, right? Charge it should be 0, right? Yes, sir. Okay. Now none of them are lepton particles. So obviously lepton will be conserved, right? Okay. So let Yes, us sir. check baryon. Sorry. तो यहाँ पे कोई भी पार्टिकल लेप्टॉन नहीं है, तो ऑब्वियसली ये भी लेप्टॉन नहीं होगा. ओके, समझ रहे हो ना? डू यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. Okay. Now let us check baryon number. So baryon should be conserved in strong interaction or any interaction. So for K minus it is 0. For proton it is +1. For pi 0 it is 0. So for I it should be +1 from baryon conservation, right? Not it. So that Y particle should be from baryon family. Okay. Now let us check strangeness. Okay. कितना होंगे K minus का? -1. -1. Very good. +0. 0. Equal to 0. 0 0 and -1. Okay. So lambda not particle. Very good. Yes, Then- lambda no. Yes. For I, for K minus it is half. For proton it is half. For pi 0 it is 1. Very good. So it should be 0, right? It should be 0, right? Because left hand side में कितना हो रहा है? On हो रहा है. Right hand side में pi 0 का on है. So from I conservation it should be 0. I for Y particle should be 0. Is there any problem? No, sir. Okay. So I from you got that quantum number for Y particle. Q is 0, B is on, S is -1, and I is 0. Okay. What about I3? Is 0. So for K minus it is -half. For proton it is half. For pi 0 it is 0. Then for I it should be 0. है ना? तो आपका ये कौन सा पार्टिकल का ये क्वांटम नंबर है? लैम्डा 0 का, राइट? Yes, sir. लैम्डा 0 का है ना? कोई प्रॉब्लम किसी का? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? तो स्ट्रेंजनेस बैरियन फैमिली में से स्ट्रेंजनेस कितना है? -1 है. I3 0 है. वो कौन सा पार्टिकल है आपका? लैम्डा 0. Lambda 0. है ना? ओके, वेरी गुड. तो ये कौन सा पार्टिकल होंगे आपका? लैम्डा 0 होंगे, है ना? ये जो पार्टिकल है लैम्डा 0 है. कोई डाउट इसमें? नहीं है, राइट? सर ये कौन सा इंटरेक्शन था इसमें गिवन? हाँ, ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, ये भी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन गिवन था. ओके और पहले वाला भी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन गिवन था. ठीक है? ओके. और यहाँ पे आप देख भी सकते हो P इंटरेक्टिंग विद सम पार्टिकल, सो इट शुड बी स्ट्रॉन्ग, राइट? मैंने लिखा है ना आपको, है ना? यस सर, यस. हाँ. कुछ कुछ ट्रिक याद रखो. अगर लेफ्ट हैंड साइड में आपका लेप्टॉन से सारे, तो क्या होंगे आपका? स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते कभी भी. लेफ्ट हैंड साइड में अगर सारे पार्टिकल आपका लेप्टॉन से है तो कभी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते. कोई इंटरेक्शन में गामा इन्वॉल्व है तो ज्यादातर चांस है वो ईएम इंटरेक्शन होने का, है ना? मैक्सिमम चांस है. अगर प्रोटॉन है लेफ्ट हैंड साइड है वो में और इंटरेक्टिंग विद सम अदर पार्टिकल, सबएटॉमिक पार्टिकल, देन इट शुड बी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन. अगर गामा हो प्रोटॉन के साथ तो एक पॉसिबिलिटी बनता है ईएम होने का भी. ठीक है? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. समझ में आ रहा है ना? टेक दैट प्रॉब्लम नाउ सर. हाँ, तो वो प्रॉब्लम K माइनस प्रोटॉन एक बार वो कौन सा? सर K माइनस प्लस प्रोटॉन हाँ, सिग्मा माइनस एंड पाई प्लस. एक मिनट. ठीक है, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम करते हैं, फिर आपका प्रॉब्लम में जाएंगे, है ना? इसको अच्छे से देखना, फिर आपका जो प्रॉब्लम है वो करेंगे. सपोज मान लो E माइनस प्लस E प्लस, है ना? ये डी के पॉसिबल है? No, sir. वाई? सर वाई? जांच कर ले. Lepton, electron-lepton number is पॉसिबल है not सर. पॉसिबल है. यस अच्छा, इस इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं? किसी का कोई आइडिया? द पेयर प्रोडक्शन. Annihilation, pair production. पेयर एनिहिलेशन. इसमें क्या होता है?
एक इलेक्ट्रॉन इधर से आता है और ऑपोजिट साइड से एक पॉजिट्रॉन आते हैं, है ना, ठीक है ना। और फिर yes, आफ्टर कोलिजन और आफ्टर इंटरेक्शन क्या होता है, एक फोटोन इमिट होता है। तो बिफोर इंटरेक्शन आपका मोमेंटम कितना है, 0 है ना। यस सर। बिफोर इंटरेक्शन आपका मोमेंटम कितना है, 0 है। आफ्टर इंटरेक्शन आपका एक प्रोटॉन इमिट हुआ है, हाँ, तो इसमें आपका क्या है, गामा है। तो प्रोटॉन का ये मोमेंटम कितना होता है, E/c। हाँ, E/c। फोटोन का इंटरेक्शन जो आपका कितना होता है, E/c। ई कितना होता है फोटोन का, h/c, h/c। तो यहाँ पे क्या है आपका फाइनल मोमेंटम कितना है, h/c। तो ये यहाँ पे क्या है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं है, ठीक है। यस सर। लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इंटरेक्शन इज नॉट अलाउड। बट इफ देयर इज अनदर गामा देन इट कैन बी पॉसिबल, yes, plus C plus and it giving the product gamma plus gamma, it is possible, but single gamma is not possible. Okay, yes, sir. यस सर। आपका प्रॉब्लम क्या था, बोलिए। आपका क्या प्रॉब्लम था, कौन सा प्रॉब्लम था, रिपीट कीजिए। Sir, K minus plus proton, K minus plus proton, sigma minus, giving out sigma minus, yes sir, sigma minus and pi plus. pi plus, ठीक है। तो इसमें ये क्या स्ट्रॉन्ग लिखा था, ये क्या था ना, स्ट्रॉन्ग ही है ना। सब प्रेडिक्ट करना था 3 अलग अलग रिएक्शन हाँ, थे, स्ट्रॉन्ग वीक ईएम, और इसका आंसर में स्ट्रॉन्ग है लेकिन इसका आई कंजर्व नहीं है। आई कॉन्सेप्ट नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ। वही ये क्या है, आपका स्पेशल टाइप ऑफ इंटरेक्शन है। और मैंने आपको क्या बोला था कि कोई अगर प्रोटॉन है ना, उसमें आपका क्या है, वो अलाउड था इसीलिए स्ट्रॉन्ग था। डिड यू गेट व्हाट आई एम सेइंग, वो अलाउड था इसीलिए स्ट्रॉन्ग, अगर पॉसिबल है तो सर अगर ये सेम रिएक्शन होता, क्वेश्चन होता अलाउड है या नहीं, तो मैं आपको एक्सेप्शन तो याद नहीं रख सकता। एक्सेप्शन, उसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, एक्सेप्शन तो आप याद नहीं रख सकते हो, बट ये अलाउड है तो किसमें अलाउड होंगे, आपका सिर्फ स्ट्रॉन्ग में होंगे। ये आप ध्यान में रखना कि अगर प्रोटॉन कोई सबएटॉमिक पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो अलाउड होंगे, स्ट्रॉन्ग में होगा, है ना। अगर ऐसे आपका अलाउड है नहीं है, इस तरह की प्रॉब्लम कभी नहीं देगा, क्योंकि ये आपका एक्सेप्शनल है। और हमेशा ये चीज ध्यान रखना, प्रोटॉन कोई सबएटॉमिक पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन करेगा तो इट शुड बी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। तो वहाँ पे आपका जो ऑप्शन में आएगा तो स्ट्रॉन्ग ही दिखा था, लिखा था ना उसमें, स्ट्रॉन्ग लिखा था ना। यस सर। हाँ, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, कि प्रोटॉन कोई सबएटॉमिक पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करेगा तो स्ट्रॉन्ग ही होगा। उसमें 3 अलग अलग इंटरेक्शन था, उसमें आपको ये करना था कि कौन सा स्ट्रॉन्ग होंगे, कौन सा ईएम होंगे, कौन सा वीक होंगे, है ना। यस सर। नॉट इट, यस, सो इट शुड बी स्ट्रॉन्ग, ऑल्दो आई इज नॉट कंसिडर्ड, बट वहाँ पे कोई ऐसे अलाउड है या नहीं है वो गिवन नहीं था। जस्ट उसमें आपको ये करना था कि कौन सा इंटरेक्शन होंगे, है ना। तो ये आप क्या है, जब भी प्रोटॉन है तो इट शुड बी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। ओके, आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, बट क्या है, कोई कोई एक्सेप्शनल होता है, बट वो मेरा जो ट्रिक है वो आप हमेशा ध्यान रखना, वो कम में आएंगे आपका। ओके सर। हाँ, ठीक है ना, अलाउड होंगे तो स्ट्रॉन्ग में ही होंगे, प्रोटॉन इंटरेक्टिंग कर रहे हैं तो। अगर गामा होता हो तो फिर अलग सिचुएशन होता, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम करो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये प्रॉब्लम 5-6 बार आया है ना। अच्छे से करना है प्रॉब्लम, ठीक है, सब लोग करना अच्छे से, ठीक है। सपोज मान लो, हाँ अच्छे से करना, इस प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज मान लो पाई मेजॉन, पाई माइनस डीके हो रहे हैं इसमें आपका म्यू माइनस एंड इस एसोसिएटेड न्यूट्रिनो, ठीक है। और पाई माइनस का रेस्ट मास गिवन है, सॉरी, रेस्ट मास कितना है याद है आप लोगों को, ये गिवन है ऑल्दो 140 MeV पर C², ठीक है। और म्यू का रेस्ट मास दिया है, म्यू माइनस का कितना है 105.7 MeV पर C²। न्यूट्रिनो का कितना है बोलिए, 0 है। हाँ, तो इसमें क्या फाइंड आउट करना होगा, जो म्यून है ये क्या हो रहा है, पाई माइनस रेस पे डीके हो रहा है, म्यू माइनस and its associated neutrino, and also given that the rest mass of pi meson, muon and neutrino,
that data also given. Then what they have asked, you have to calculate the energy of muon, energy of neutrino or antineutrino, and velocity of muon. कैसे करोगे? सबको क्वेश्चन हाँ, सबको क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया सबको कि एक pi meson रेस पे डीके हो रहा है mu meson and its associated antineutrino, and given that race mass of pi meson is 140 MeV per c square, mu meson 105.7 MeV per c square, and race mass of antineutrino is 0. Then how much is the energy of muon, and how much is the energy of this antineutrino, and how much is the velocity of muon? Can you able to solve? कैसे करोगे बताओ, प्रोसेस बताओ. सर एनर्जी कंजर्वेशन से इम्यू निकाल देंगे. हाँ ठीक है. मोमेंटम कंजर्वेशन की हेल्प वेरी से गुड, वेरी गुड. रिलेटिविस्टिक मास एनर्जी लगाना पड़ेगा. वेरी गुड. तो पहले क्या करेंगे, एनर्जी शुड बी कंजर्व, राइट. इट मींस जो इसका एनर्जी है ई पाई शुड बी इक्वल्स टू हाउ मच, ई म्यू प्लस ई न्यू एंड E nu bar, right? Or you can say E mu plus E nu bar should be equals to how much? How much? It should be how much? M pi c square. This is the only rest mass energy because it is at rest. Okay. So this is equation number, let us say this is equation number 1. Another laws is, since it is at rest, so the linear momentum should be 0. So you can write from linear momentum conservation 0 equals to, let us say that the linear momentum of this fellow is p mu, and for antineutrino it is p nu bar. It means p mu should be equals to minus p nu bar. Sorry, but not bar, it is in vector form. It means the magnitude of p mu should be equals to p nu, right? In magnitude form, what you can write? You can write p mu should be equals to p nu bar. And let us say that is simply p. कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? No, sir. सबको समझ में आया यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है लीनियर मोमेंटम वो सेम होंगे, और लेट अस एज्यूम दिस इज इक्वल्स टू सिंपली p. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? अब इसका एनर्जी कितना होंगे? म्यू माइनस का एनर्जी कितना होंगे? एनर्जी कितना होंगे म्यू माइनस का? p mu square c square plus m mu square c to the power 4, the root. हाँ, so we can write simply, we can write e mu square equals to m mu square c to the power 4 plus p square c square, right? Because we have assumed that linear momentum is simply p, right? Is not it? Yes, sir. So let us take this is equation number 2. ठीक है? और e न्यू स्क्वायर कितना होंगे फिर? और e स्क्वायर सी स्क्वायर, ये कितना होगा आपका? e स्क्वायर c स्क्वायर, right? Yes, sir. Because mass is 0. Let us assume this is equation number 3. Okay. Now we'll subtract equation 2 from 3. Then what will be the output? so e mu square minus e mu square equals to m mu square c square. E nu bar square equals to simply m mu square c to the power 4, है ना? तो ये आपका कितना हो जाएंगे? e mu माइनस e nu bar equals to m mu square c to the power 4 divided by how much? How much? m pi c plus square.
वेरी गुड, m M by pi c square, राइट? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम किसी को? जस्ट e mu प्लस e nu कितना है पहले इक्वेशन से? m pi c square, राइट? From Yes, sir. first equation, e mu plus e nu bar was how much? M pi c square, right? So from this equation, e mu square minus e nu square means e mu plus e nu into e mu minus e nu equals to m mu square c to the power 4. So if you divide both sides by e mu plus e nu, you will get that output. E mu square, sorry, m mu square c to the power 4 divided by m pi c square. And let us take this equation number is 4. ठीक है? Now, if we add equation 1 and 4, sorry, equation 4, कितना क्या मिलेंगे आपको बताइए जरा? So c to the power 4 m pi square plus m nu square. लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेंगे आपको? E mu. On the left hand side, simply you will get 2 e mu, right? Not it? Yes, sir. 2 e mu. Any doubt here? No doubt, right? No, sir. Because you have first equation equals e mu plus e nu bar equals to m pi c square. Okay, this was your first equation. Now if you add equation 1 and 4, on the left hand side, nu bar will be cancelled. It will be simply 2 e mu, right? 2 e mu equals to simply m pi c square plus m mu square c to the power 4 divided by m pi c square. Any doubt here? No, sir. No, right? Now can you calculate? So you have this equation is fully based on mass, right? And mass is known for all particles. So can you now calculate how much will be the sorry e mu? So e mu will be simply m pi c square whole square plus m mu c square whole square divided by 2 m pi c square. Is there any doubt? no, sir. Good. No, right? Now can you calculate how much will be the e mu? Can you calculate? कितना होंगे? Sir, m pi square plus m mu हाँ, square. तो m pi c square का वैल्यू रखोगे कितना है वो? जस्ट यहाँ पे कितना कौन सा नंबर कितना नंबर आएंगे? 140 स्क्वायर, राइट? बिकॉज एम ई वी पर सी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, राइट? समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? एम पाई का जो वैल्यू है 140 एम ई वी पर सी स्क्वायर, राइट? एंड यू हैव सी स्क्वायर, so c square will be cancelled, so it will be simply 140 square and the unit will be MeV, and here sorry MeV square, and on the denominator you have MeV, so it will be simply MeV, right? तो पहले मैं क्या किया, simply m pi c square का वैल्यू कितना रखा 140 एंड इसका स्क्वायर एक कितना होंगे आपका mu c square 105.7 the whole square on 105.7 राइट स्क्वायर, ठीक है? डिवाइड बाय 2 इंटू कितना है 140, राइट? और नीचे जो यूनिट है आपका कितना है एमईवी होंगे और ऊपर कितना होंगे आपका एमईवी स्क्वायर, राइट? तो एक एमईवी कट जाएंगे आपका, है ना? yes sir एनी डाउट हियर? नो, राइट? yes sir इज देयर एनी डाउट? No, sir. नाउ कैन यू प्लीज कैलकुलेट? so 0.785 MeV हाँ 0.785 MeV सब लोग कैलकुलेट कीजिए जरा 140 चलो, स्क्वायर प्लस 162.7 MeV. 162.7 MeV. एवरीबॉडी कितना हो रहा है 140 स्क्वायर प्लस 105.7 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 140 कितना आ रहा है? 140 स्क्वायर कितना आ रहा है बताइए?
140 स्क्वायर कितना आ रहा है? 19600 19600 105 का स्क्वायर 105 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 11172.49 हाँ उसका ऐड कीजिए, कितना आ रहा है? उसका ऐड कीजिए। 30772 वेरी गुड। डिवाइड बाय 280 कीजिए। 109.9 109.9, right? So this is the energy. Okay, very good. So mu is how much? mu is how much? 109.9 0.9 MeV. फिर इन्यू कितना होंगे बताइए जरा, इन्यू कितना होंगे? E5 minus E mu. वेरी गुड। तो सिंपली कितना होंगे आपका? एवरीबॉडी एग्रीड? जो बोल रहा है Yes. ठीक बोल रहा है? ये कितना होंगे आपका? सिंपली E5 minus E mu, right? And that will be how much? 30.1 MeV. Hmm? 30.1 MeV. Yes, 30.1. कोई डाउट? अगर इसका मोमेंटम पूछे तो इन्यू का, सॉरी जो न्यूट्रिनो, इसका मोमेंटम पूछे तो कितना होंगे? E nu by C. वेरी गुड। सब एग्रीड है? कोई प्रॉब्लम? एवरीबॉडी एग्रीड? हाउ मच विल बी द मोमेंटम ऑफ दिस एंटी न्यूट्रिनो? सो फॉर Yes. दिस since its rest mass is 0, so it will be simply E nu bar equals to P nu bar into C, right? So P nu bar will be simply E nu bar divided by C. Okay, so just इसे डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ वेलोसिटी, जो म्यून पार्टिकल है उसका वेलोसिटी कितना होंगे, कैसे कैलकुलेट करोगे? Sir, यस, time for next class. ओके ओके। सो हाँ सर, इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हैं m pi c square upon under root 1 minus c square by c square वाली। ओके ओके, टुमारो विल डिस्कस। ओके ओके सर। ओके, सो इज इट ओके? नो प्रॉब्लम, राइट? यस सर। Yes. ओके ओके, टुमारो विल डिस्कस। Thank you. थैंक यू सर। Okay, most welcome. Okay, bye. Yeah.